बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। आज मैं ट्राई कर रही थी पराठा, जो मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने ट्राई किया था। वो भी फिलिंग वाला, यानी कि सब्जी वाला। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया क्योंकि मुझे ना सिंपल पराठा नहीं बनाना आता, ये तो फिर दूसरा था, लेकिन बेहतर बन गया मेरे अपने लिए। एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि अगर किसी भी चीज़ का पराठा बनाना है, यानी कि सब्ज़ी किसी का बनाना है या आलू डाल के बनाना है, उसकी फिलिंग कम रखें। अगर आप फिलिंग ज़्यादा रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली निकलेगा आपका। अगर फिलिंग नॉर्मल रखेंगे तो वो कभी नहीं निकलेगा। और पराठा हमेशा घी में बनाए, चाहे देसी हो या आम घी जो होता है उससे, तभी फिट बनता है।
फिलिंग वाले पराठे पेड़े थोड़े छोटे रखने चाहिए नॉर्मल साइज में। और जो ये डबल रोटी ऊपर आएगी तो इससे वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, वो फिर मज़े का नहीं लगता। रेशमी आम आते हैं उससे सब्जी आम। ये हमारा नाश्ता था, साग वाला पराठा और साथ में साग और चाय। मुझे तो बहुत मज़ा आया। एक कि मुझे अच्छे से आ गया बनाना, दूसरा टेस्टी था। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और मुझे बताएं कि मैंने इस तरह
कि मेरी क्या गलती थी और क्या अच्छा बनाया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी हम लोग के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।